Hello everyone, welcome back to Anita Misra Math classes and this is Anita Misra here. Today I have again taken class 12 chapter 2 inverse trigonometric function exercise 2.2 and in this video I am going to start from question number 16 and for previous question watch part 1, part 2 and part 3 of this video. And don't forget to subscribe my channel to watch more videos of class 12 maths. So let us start this exercise from question number 16 and it is sine inverse sine 2 pi by 3. Here we have to find out value of this inverse function. तो यहाँ पे हमें ऑलरेडी पता है कि साइन इनवर्स फंक्शन का रेंज होता है -π/2 टू π/2. यानी साइन इनवर्स फंक्शन को हम कैसे डिफाइन करते हैं? साइन इनवर्स इज -1 to 1 and it is in closed interval -π/2 to π/2. So we can say that sine inverse sine x will be x where x belongs to -π/2 π/2. So you can write -π/2 and π/2. और यहाँ पे जो x दिया हुआ है वो है 2π/3. 2π/3 हमारा π/2 से क्या है? बड़ा है. इसलिए हम इस 2π/3 को थोड़ा सा चेंज करेंगे. कैसे करेंगे? वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन पाई माइनस π/3. पाई माइनस π/3, 3π माइनस पाई 2π/3. वैल्यू को हमने चेंज नहीं किया है, केवल उसको रीअरेंज किया है दूसरे टर्म में. सो वी कैन राइट साइन इनवर्स साइन पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू साइन थीटा. सेकेंड कोऑर्डिनेट में साइन क्या होता है? पॉजिटिव होता है. सो इट विल बी साइन theta is here π/3, so write π/3. Here we have used right here sine pi minus theta is equal to sine theta का यूज किया. Now we have sine inverse sine π/3 and π/3 belongs to -π/2 to π/2. यानी यहाँ पे जो π/3 है -π/2 और π/2 के बीच में आएगा. सो वी कैन राइट इट विल बी π/3 एंड दिस इज योर आंसर. π/3 इज योर आंसर. एंड नेक्स्ट इज क्वेश्चन नंबर 17. इट इज tan inverse tan 3π/4. Here we have to find out value of this inverse function. And all of you know that range of tan inverse function is open interval -π/2 π/2. So let us define tan inverse function. So we can say that first tan inverse is such that domain क्या होता है इन tan inverse का? रियल नंबर and range is -π/2 to π/2. Okay. So we can say that tan inverse tan x will be x when x is greater than -π/2 and less than π/2. Okay, it is open interval. That means x is not equal to -π/2. It is only greater than -π/2 and less than π/2. It is not equal to π/2 or not equal to -π/2. Now here x is given 3π/4 and 3π/4 is greater than π/2. π/2 से बड़ा होगा. So यहाँ पे हम 3π/4 को क्या करेंगे? थोड़ा सा चेंज करेंगे. वैल्यू नहीं चेंज करेंगे, उसको थोड़ा सा रीअरेंज करेंगे. कैसे रीअरेंज करेंगे? सो वी कैन से दैट फर्स्ट राइट tan इनवर्स एज इट इज, देन राइट tan 3π/4 को
दूसरी फॉर्म में लिखना है। कैसे लिख सकते हैं? 3 पाई/4 को हम लिख सकते हैं पाई माइनस पाई बाई 4। सो 4 पाई माइनस पाई, 3 पाई/4, कोई चेंज नहीं हुआ। ओके, सो इट इज tan इनवर्स 10 पाई माइनस पाई बाई 4 क्या होगा? -10 पाई/4, क्योंकि tan हमारा सेकेंड कोऑर्डिनेट में हमेशा क्या होता है? निगेटिव होता है। तो यहाँ पे पाई माइनस पाई/4 किस में आएगा? सेकेंड कोऑर्डिनेट में आएगा। तो सेकेंड कोऑर्डिनेट में tan निगेटिव होता है, सो इट विल बी tan पाई/4। Then tan inverse, you can write here tan pi minus theta is equal to minus tan theta, and here we can write tan minus pi by 4 because tan minus theta is equal to minus tan theta. Here it is minus tan theta is given. So minus tan theta can be written tan minus theta because this one tan minus theta is equal to minus tan theta. Now we have tan inverse tan minus pi/4 and minus pi/4 belongs to this range. Okay, minus pi/4 हमारा minus pi/2 और pi/2 के रेंज में आएगा. So it will be minus pi/4. So minus pi/4 is our answer for this question. So value of tan inverse tan 3 pi/4 will be minus pi/4. This is your next question is question number 18. It is tan sin inverse 3/5 plus cot inverse 3/2. Here we have to find out value of this function. इस क्वेश्चन को आज हम 2 मेथड से सॉल्व करेंगे. फर्स्ट मेथड में here it is given tan. Suppose this one is x plus this one is y. That means tan x plus y is given. So we can write tan x plus y is equal to tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. यहाँ पे हम tan a plus b का फॉर्मूला यूज करेंगे. So let us write सबसे पहले let us suppose let sin inverse 3/5 is equal to x and cot inverse 3/2 is equal to y. So we can write this become tan, ये किस फॉर्म में हो जाएगा? tan x, this is x, sin inverse 3/5 is x plus and this one is y. And what is formula for that? Yes, it is tan x plus tan y divided by 1 minus tan x into tan y. This one is equation number 1. तो यहाँ पे हमें किसकी वैल्यू चाहिए? tan x की वैल्यू चाहिए और tan y की वैल्यू चाहिए, और हमें sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x यहाँ पे हमने लिया हुआ है. सो फ्रॉम हियर वी कैन राइट हियर sin इनवर्स 3/5 इज इक्वल टू x. So what will be sin x? So sin x will be 3/5. sin x क्या हो जाएगा? 3/5. Then what will be cos x? Cos x is equal to root 1 minus sin square x. So you can write here 1 minus sin square x. So it will be root 1 minus square of this 9/25. So we can write it will be 25 minus 9, 16 divided by 25. So it will be 4/5. Then what will be tan x? So tan x will be
tan x will be sin x divided by cos x. And value of sin x is 3 by 5. So 3 by 5 is divided by 4 by 5. So it will be 3 by 4. So tan x is 3 by 4. Now we have to find out tan y. Here it is given cot inverse 3 by 2. We have taken cot inverse 3 by 2 is equal to y. So what will be cot y? Yes. So we can write cot y is equal to 3 by 2. Then tan y. Tan y is equal to 1 by cot y. Yes, so you can write here 1 by cot y. So it will be 1 by 3 by 2. So 2 by 3. Now we have tan y and tan x. So put this value here. So you can write from 1 tan x. Tan x is 3 by 4. So write here 3 by 4 plus tan y, it is 2 by 3 divided by 1 minus tan x. Tan x is 3 by 4 into 2 by 3. What will be LCM? It will be 12. Okay. So 4 3 ja 12, 3 3 ja 9. 9. Divide this 12 by 3. 3 4 ja 12. 4 2 ja 8. And here it will be 4 3 ja 12. So multiply here. It will be 12 minus 3 2 ja 6 divided by 12. 12 and 12 will cut. So we can write 9 plus 8. It will be 17. And 12 minus 6 will be 6. So 17 by 6. This is your answer. 70 by 6 is your answer. So let us solve this question again by second method. In second method, we have to convert this sin inverse 3 by 5 in form of tan inverse. And this one, cot inverse 3 by 2 also in form of tan inverse. Okay. So for this, we have to suppose, first write here. Let sin inverse 3 by 5 is equal to x and cot inverse 3 by 2 is equal to y. From here we can say that what will be sin x? Sin x will be 3 by 5. Then what will be cos x? Cos x will be root 1 minus sin square x. So it will be 9 by 25. So we get 4 by 5. Then tan x. Tan x is equal to sin x divided by cos x. Sin x is 3 by 5 and divided by cos x. So divide it by 4 by 5. 5 and 5 will cancel. So it will be 3 by 4. So x will be tan inverse 3 by 4. That means x means sin inverse 3 by 5 will be tan inverse 3 by 4. यानी sin inverse 3 by 4 की जगह पे हम क्या लिख सकते हैं? tan inverse 3 by 4. And for here what will be cot y? Cot y will be 3 by 2. Then tan y will be 1 by cot y. So it will be 2 by 3. So y will be tan inverse 2 by 3. So in place of this y means cot inverse 3 by 2, we can write tan inverse 2 by 3. So we can write this one tan, write first as it is sin inverse 3 by 5 plus cot inverse 3 by 2 is equal to tan. In place of sin inverse 3 by 5, we can write tan inverse 3 by 4. So write here tan inverse 3 by 4 plus, in place of cot inverse 3 by 2, we can write tan inverse
2/3. And what is formula for tan inverse x plus tan inverse y? Yes, it is tan inverse x plus y divided by 1 minus xy. So we can write from here, it will be tan into tan inverse x plus y. X is here 3/4. 3/4 plus y is 2/3 divided by 1 minus 3/4 into 2/3. Okay. So we can write tan inverse. Here it will be 3 3 are 9 plus 8. 9 plus 8 divided by 12. And here it will be 12 minus 6 divided by 12. 12 and 12 will cut. So we can write again tan inverse. 9 plus 8 will be 17. 12 minus 6 will be 6. Now we have tan inverse 17/6. So it will be 17/6. So this is our answer. Because next question is question number 19. It is cos inverse cos 7 pi/6. Here we have to find out value of this inverse function. And all of you know that range of cos inverse function is 0 to pi. But here it is given 7 pi/6. 7 pi/6 0 to pi के रेंज में नहीं आएगा. 7 pi/6 पाई से बड़ा है. तो फिर कैसे हम इसकी वैल्यू फाइंड आउट करेंगे? चलिए देखते हैं. First we have to write condition. Write this one. Cos inverse cos x is equal to x होगा when x belongs to 0 to pi. That means x is greater or equal than 0 and less or equal than pi. x हमें इस रेंज में चाहिए. इसके लिए हम इसको थोड़ा सा चेंज करेंगे. कैसे करेंगे? Let us see. First write cos inverse. Write cos 7 pi/6 as it is. अभी इसको चेंज कैसे करेंगे? इसको लिखेंगे cos inverse. Write this cos 7 pi/6 को हम लिख सकते हैं pi plus pi/6. 6 pi plus pi. 7 pi/6. Same. Now we can write cos inverse cos pi plus theta. Cos pi plus theta is equal to minus cos theta. So we can write minus cos pi/6. Now we have cos inverse minus cos pi/6. अब यहां पे हम इसको दो मेथड से सॉल्व कर सकते हैं. पहला, अगर हम फार्मूला यूज करें तो फार्मूला क्या होता है? cos इनवर्स माइनस एक्स. cos इनवर्स माइनस एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस cos इनवर्स एक्स. फर्स्ट हम ऐसे ही करेंगे. सो इट विल बी पाई माइनस cos इनवर्स एक्स एंड एक्स इज हियर cos pi/6. This one. So it will be, right here formula. Formula is cos inverse minus x is equal to pi minus cos inverse x. So we can write pi/6. pi/6 अभी हमारा 0 to pi के रेंज में आएगा. So we can write cos inverse cos pi/6 की जगह हम लिख सकते हैं pi/6, क्योंकि pi/6 0 to pi के रेंज में आएगा. So cos inverse cos x is equal to x हो जाएगा. यहाँ पे x की जगह पे pi/6 दिया हुआ है. So
it will be 6 pi minus pi. So it will be 5 pi by 6. So this is your answer. 5 pi by 6. यहां से अगर हम सेकंड मेथड से करें तो कैसे करेंगे? सेकंड मेथड से अगर हम इसको सॉल्व करते हैं, सो वी कैन राइट cos इनवर्स इट इज माइनस cos पाई बाई 6. इसको दूसरे मेथड से कैसे सॉल्व करेंगे? सो वी कैन राइट cos इनवर्स. वी नो दैट cos पाई माइनस थीटा इज इक्वल टू माइनस cos थीटा. Okay, so in place of this minus cos theta, we can write cos pi minus theta, and theta is pi by 6. Right here formula. Formula is cos pi minus theta is equal to minus cos theta. Now we can write cos inverse cos 6 pi minus pi cos 5 pi by 6. Now 5 pi by 6 ये 0 to pi के रेंज में आएगा, पाई से छोटा होगा, इसलिए ये 0 to pi के रेंज में होगा. सो cos इनवर्स cos x इज इक्वल टू x यहाँ पे हो जाएगा, और x की जगह पे क्या दिया है? 5 pi by 6. सो वी कैन राइट 5 pi by 6. सो दिस इज योर आंसर. तो हम यहां से दोनों मेथड से सॉल्व कर सकते हैं, इससे भी और इससे भी. सो आई होप यू अंडरस्टूड दिस क्वेश्चन वेरी वेल. सो लेट अस सी आवर नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 20. इट इज sin pi by 3 minus sin inverse minus 1 by 2 is equal to, we have 4 options and we have to find out which one is correct. Okay, तो यहां पे हम सबसे पहले साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे. So let us start this question. First we have to write this as it is. Sin pi by 3 minus sin inverse minus 1 by 2. This one is 1. Right. Now we have to find out value of sin inverse minus 1 by 2. For this, we have to suppose let sin inverse minus 1 by 2 is equal to y. जैसा पहले करते थे. So what will be sin y? Sin y will be minus 1 by 2. And all of you know that sin 30 degree is equal to 1 by 2. So in place of this 1 by 2, we can write sin 30 degree means pi by 6. And we know that minus sin theta is equal to sin minus theta. Okay, so in place of this we can write sin minus pi by 6 and write here formula. Here it is sin minus theta is equal to minus sin theta होता है. यहाँ पे माइनस साइन थीटा दिया हुआ था, तो उसको हमने लिखा साइन माइनस थीटा. थीटा इज हियर पाई बाई 6 साइन वाई. सो वाई विल बी माइनस पाई बाई 6. वाई मीन्स साइन इनवर्स माइनस 1 by 2. सो वी कैन राइट साइन इनवर्स माइनस 1 by 2 इज इक्वल टू माइनस पाई बाई 6. Put this value in this one. So we get sin, write this pi by 3 minus sin inverse minus 1 by 2 की वैल्यू क्या आई है? minus pi by 6. So write here minus pi by 6. And write here sin. Minus and minus become plus. So we can write sin pi by 3 plus pi by 6. So we can write sin, take LCM, it will be 6, 3 2 जा 6, so 2 pi plus 6 से 6 divide होगा 1, so it will be pi. So we can write sin 2 pi plus pi, 3 pi by
6. So we can write sine, divide this 6 by 3, 3 2 ja 6, sine pi by 2. And we know that sine pi by 2 is equal to 1. So in place of sine pi by 2, we can write 1. 1 is our answer. And 1 is given in option number D. So option number D is correct. We can say that D is correct. Our next question is question number 21. It is tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3 is equal to. We have given 4 options: pi, minus pi by 2, 0 and 2 root 3. We have to find out which one is correct. Okay, so let us see this question. So first we have to write this one as it is. Tan inverse root 3 minus cot inverse minus root 3. First we have to find out value of tan root 3. So for this, let tan inverse root 3 is equal to y. Then what will be tan y? Tan y will be root 3. And we know that tan 60 degree is equal to root 3. So in place of this, we can write tan 60 means pi by 3. So y will be pi by 3. Y means tan inverse root 3 is equal to pi by 3. So we have value of tan root 3. Now we have to find out value of cot inverse minus root 3. So first write cot inverse minus root 3. And we know that cot inverse minus theta is equal to pi minus cot inverse theta. So it will be pi minus cot inverse root 3. Now we have to find out value of cot inverse root 3. So let us suppose let cot inverse root 3 is equal to y. Then cot y will be root 3. And we know that cot 30 degree, that means pi by 6 is equal to root 3. So write here cot pi by 6. So y will be pi by 6. So we can say that cot inverse minus root 3 is equal to pi minus y means this one. This is equal to pi by 6. Cot inverse root 3 will be pi by 6. Here it is y, and in place of y we can write cot inverse root 3. So it will be 6 pi minus pi. 5 pi by 6. Now put this value in here, this one. So we can write tan inverse root 3 is equal to pi by 3. So write here pi by 3 minus cot inverse minus root 3, and this is 5 pi by 6. So write here 5 pi by 6. Now solve this. LCM will be 6. LCM क्या होगा? 6 होगा. Divide this 6 by 3. 3 2 ja 6. So 2 pi minus 5 pi. So it will be 5 pi minus 2 pi minus 3 pi by 6. Divide this 6 by 3. 3 2 ja 6. So we get minus pi by 2. This is our answer. Minus pi by 2. And minus pi by 2 is given in option number 2. So option B is correct. So I hope आपको ये सारे क्वेश्चंस बहुत ही अच्छे से समझ में आए होंगे. इसलिए आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर कीजिए. और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए. सो सी यू इन नेक्स्ट वीडियो विथ न्यू एक्सरसाइज. टिल देन, बाय बाय, and thank you so much for watching.